ओके, आगे सब मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, तो जरा मैं इसको admit करता हूं। तो एटलीस्ट हम कहीं पे पहुंचे थे, शुक्र है, वरना मुझे रिपीट करना पड़ता। यानी हम यहां तक पहुंचे थे कि मैंने सीक्वेंस डिफाइन की थी एफ एन एक्स, विच ऑफ कोर्स एफ एन एक्स वाज अ सीक्वेंस. They were all continuous functions on the interval -1 to 1. Okay, good. What we showed that fnx is a sequence inside this, and we showed that norm of fn, जो integral norm, this goes to 0 as n approach infinity. So which means fn is a Cauchy sequence in CAP. Whatever, a की जगह यहाँ है, चलो मैं लिखता हूँ C-1 और एडमिट करना है तो ओके, हाँ ओके. Now we have to show that it does not converge to a continuous function, and it does not converge to. Now remember that. Now what would be the limit n approaches infinity fn of x? And remember that fn(x) is defined as it was 0 from -1 to 0. It was nx from what? 0 to 1 by n. And of course, this was 1 from 1 by n to 1. Okay, so what would be the limit as n approaches infinity fn of x? It would be, अरे कर दो ना, अगर n इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, है ना? सो वो फंक्शन होगी जो इसका लिमिट होगा, इट मस्ट बी 1. चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, इट मस्ट बी 1. इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. इट मस्ट बी 0 फ्रॉम -1, क्योंकि इसका n के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है. लेकिन इसका पड़ेगा, इसका n के साथ कनेक्शन है. सो एज n अप्रोच इन्फिनिटी, इसका जो इट वुड बिकम, इट वुड बी, जैसे अगर जो तुमने शक्ल देखी ना, यानी इस तरह की फंक्शन बन जाएगी इसका जो लिमिट होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस कुछ ऐसे थी, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये बन रही थी सेकंड ऐसे 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 ऐसे, इवेंचुअली ये बन जाएगी दिस. सो दिस इज द फंक्शन. सो लेट मी कॉल इट g of x. नो, ऐसे ही रखते, चलो g of x लिखते हैं इसको. सो चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 0 less than x less than equal to 1. सो ये इस तरह इसका लिमिट है. ओके, नाउ सपोज मैं करूंगा, ओके ऐसे में लिखूं. ओके, ऑल्सो मुझे दिखाना है उस नॉर्म में ये कन्वर्ज करनी चाहिए ना, इंटीग्रल नॉर्म. सपोज एफ एन कन्वर्जेस टू g in this norm. मतलब ये तो यूजुअल पॉइंट वाइज लिमिट है, यू हैव टू रिमेंबर, है ना, जो हम करते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, जो हमने किया है बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में. तो लेकिन मुझे वो इंटीग्रल नॉर्म में इसकी कन्वर्जेंस चाहिए. इन इंटीग्रल नॉर्म में लिखता हूँ. चलो, उसका मतलब ये है कि नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस जी, जो इंटीग्रल नॉर्म है, goes to 0, which means that limit n approaches infinity, norm of fn minus f minus g, मैंने g लिखा है यहाँ पे, चलो मैं यहाँ f लिखता हूँ. ये तो इसका पॉइंट, मतलब क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि मैं g नाम दे चुका हूँ. So it means that norm of fn minus f goes to 0, which means that limit n approaches infinity. What do I have? fn approaches infinity, fn minus f is equal to 0. वही मतलब होता है लिमिट का. तो चूंकि नॉर्म कंटिन्यूअस है तो मैं इसको लिमिट को अंदर ले जा सकता हूँ, विच एवर नॉर्म कोई भी हो, क्योंकि इंटीग्रल नॉर्म हो, कोई भी नॉर्म हो. So it means f is equal to 0, which means that मैं यहाँ लिखूं, लिमिट तो है g, है ना, तो उसका मतलब g minus f is equal to 0. और हमें पता है अगर किसी भी वेक्टर का नॉर्म 0 हो, फिर तो वो वेक्टर 0 ही होगा, which means that f
जो है is equal to G. So therefore, and of course, f जो है G जो है, G is not continuous. As we can see, it's not continuous at 0. So and f does not belong to C minus 1 1. And hence जो हमारा था C minus 1 1 is not complete under the integral norm. Sup norm में ये complete. तो same space हो सकती है. If we change the norm, it means we change the topology, we change its convergence structure. और अगर हम वो change करेंगे तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो कंप्लीट ही रहे. अगर हमने वो कन्वर्जेंस स्ट्रक्चर ही चेंज किया जो उसको नॉर्म देता है, मेट्रिक देता है. ओके, इसमें काफी टाइम लिया इस एग्जांपल में. ओके, इसके बाद हम क्या करें? ओके, क्या रह गया इसके बाद? ओके, एक और चीज हम कर सकते हैं. We can talk about now. Ultimately, we have to talk about some mappings, है ना? We तो हमें स्ट्रक्चर इस पे इम्पोज किया, which is a normal linear space. Next step कहीं भी होता है, जैसे अगर तुम ग्रुप्स पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप तुम पढ़ोगे फिर मैपिंग्स बिटवीन ग्रुप्स which preserve that structure. तुम करोगे होमोमॉर्फिज्म्स को स्टडी. इसी तरह से अगर तुम टोपोलॉजिकल स्पेसेस की तरफ हो, then you talk about continuous mappings, जो structure preserving mappings होंगे. Now suppose X is a normal linear space, Y is also a normal linear space. So it means both are actually linear spaces. क्योंकि normal linear space है, पहले तो linear space होना चाहिए. So they are vector spaces. Then we already know structure preserving maps from X to Y. अगर मुझे पता नहीं तुमने कौन सा सिंबल किया था, या तो उसको हम होम एक्स वाई कहते हैं या फिर एल एक्स वाई भी कहते हैं. मुझे पता नहीं तुमने कौन सा सिंबल यूज किया था. ये वाला मैं वही करूंगा. होम किया था. Homomorphisms, and that preserve the linear structure. It's a mapping. Home. These are all mappings from f from x to y, such that they preserve the structure. यानी अगर मैं ऐसे लिखूं, f of x1 plus x2 is equal to f of x1 plus f of x2, and f of alpha x is equal to alpha times fx. Of course, for all x1, x2 belonging to let me call x, and alpha belonging to the underlying field, which in our case is either the set of real numbers or the set of complex numbers. So what we do now, ये home तो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगा, okay, I want to do मैं करना चाहूंगा कि जो जिसका नॉर्म के साथ भी कोई कनेक्शन हो, ऑब्वियसली, है ना. I would like to figure out those mappings जिसमें ये प्रॉपर्टी तो हो ही, और प्लस ये कि f कंटिन्यूअस हो. ठीक है ना, f कंटिन्यूअस हो. तो उसके लिए कंटिन्यूटी तो खैर हमें पता ही है, वही होगी जो मेट्रिक स्पेस में होती है, बिकॉज एवरी नॉर्मल लीनियर स्पेस इज अ मेट्रिक स्पेस. बट in this case, this